Friends, today we will discuss about the goodwill. Goodwill, its nature and valuation. Goodwill may be said to be that element arising from reputation, connections or other advantages possessed by a business which enables it to earn greater profit than the return normally to be expected on capital employed. Means goodwill is that element which enables it to earn greater profit than the normal conditions. Now the nature of the goodwill. Actually, goodwill is an intangible asset. It is linked as established business built over time. Business gain favorable reputation, maintaining good customers relationship and effective brand building as it is expected to earn profit year after years. Goodwill is of two types: self-generated यानी non-purchase goodwill and purchase goodwill. Self-generated goodwill means that goodwill which is not purchased but is earned by the efforts of the partners. And purchase goodwill is that goodwill for which the firm has paid considerations in cash or kind. As per Accounting Standard 26 यानी AS 26, intangible assets prescribes that goodwill should not be recognized in the books of account unless consideration is paid for it. Therefore, self-generated goodwill is not recognized in the books of account and purchase goodwill is recognized in the books of accounts. There are few factors which affect the value of goodwill, like efficient management, favorable location, favorable contract, longer establishment of business, advantages of patent, access of supplies, quality of product, market situations, risk associated with business, nature of business, past performances, after sales service, good customer relations, and good labor relations. Now question comes, why we are valuating goodwill? What is the need for valuing goodwill? In partnership, when there is a change in profit sharing ratio, when a new partner is admitted, when an existing partner retires or dies, or the firm is sold as going concern, or the firm is amalgamated, or the firm is converted into a company. In that situations, we need to evaluate the goodwill. There are three methods of evaluating goodwill: average profit method, super profit method, and capitalization method. In average profit method, there are two ways: simple average profit method and weighted average profit method. And in capitalization, again there are two ways: capitalization of average profit and capitalization of super profit. Average profit method, simple average profit method. There is a formula: goodwill is equal to average profit into number of years purchase. The question comes, what is average profit and what is number of years purchase? Average profit means that normal profit of the past years divided by number of that years for which the average profit is to be considered for the valuation of goodwill, which is earned in normal conditions. Means in a year's profit we do not consider abnormal gain or loss for evaluating the goodwill. Second point is number of years purchase. It means number of years for which the firm is likely to earn same amount of profit because of the efforts put in the past. Means पहले किए गए प्रयासों के आधार पर यदि हम ये अनुमान लगाते हैं कि हम आने वाले कुछ वर्षों तक वैसा ही प्रॉफिट प्राप्त करते रहेंगे जैसा अभी हमने प्राप्त किया है, तो वो जो आने वाले कुछ वर्ष हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, देन हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, देन हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं.
स्टेप 1 में जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जिसको कि हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। इसको मैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी साल के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर लिया जाए और एबनॉर्मल गेन्स जो उसमें जुड़े हुए थे उनको माइनस कर दिया जाए, तब जो प्रॉफिट आएगा वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट यानी नॉर्मल कंडीशंस में प्राप्त किया जाने वाला बिजनेस प्रॉफिट होगा। फॉर दैट वी टेक द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट ईयर and then we make adjustment regarding losses and gains. We add abnormal loss, we add loss on sale of fixed assets, maybe loss by fire, overvaluation of opening stock and undervaluation of closing stock is added, and non-recurring expenses and capital expenses if they are charged as revenue expenditure that are added. Abnormal gain like profit on sale of fixed asset, undervaluation of opening stock, overvaluation of closing stock, non-recurring incomes, income from non-trade investments, partners' remuneration if it is not deducted, any future expenses like insurance premium, etc., we will deduct from that profit to get the normal business profit or future maintainable profit. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 1 में हम स्टेप 2 पर आते हैं एंड वी फाइंड एवरेज प्रॉफिट। फॉर दैट पर्पस एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर्स फॉर विच वी आर टेकिंग एवरेज प्रॉफिट, दैट टोटल प्रॉफिट वी डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। Add the normal profit as per step 1 and divide it by total number of years for which profit is determined to calculate average profit. We get average profit. Then we follow step 3 and we establish the number of years purchase. Now we will follow the fourth step, that is find value of goodwill, and for that purpose we will follow the formula goodwill is equal to average profit multiplied by number of years purchase. This we can understand with the example. If the firm earned the profit in the previous years as 14,000, 15,000, 11,000 and 7,000 respectively, and goodwill is to be valued at 3 years purchase of the average profit of past 4 years, then 4 years के प्रॉफिट को हम ऐड करके और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, एंड इन दिस क्वेश्चन इट विल बी 12,000. This is 12,000, and to find out the value of goodwill, average profit, that is 12,000 multiplied by number of years, that was 3, that is number of years purchase, and then we got the goodwill 36,000. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम इस एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझ सकते हैं. देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली. गुडविल वाज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. यानी यहाँ पर ईयर ऑफ परचेज है 2 एंड एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा 4 years का, एंड 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है 15-16 it was 70,000, 16-17 1 lakh, 17-18 55,000 that was loss, and 18-19 1 lakh 44,000. हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, लाइक फर्म हैड एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग 15-16. फर्म incurred abnormal loss of 20,000 in the year 16-17. And repair of car amounting to 50,000 was debited to vehicle account on 1st June, and it was a repair and it was debited to vehicle account, and depreciation was charged on that vehicle at 12% per annum on straight line method. Now you have to calculate the value of goodwill. ध्यान दीजिए, पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इनका प्रयोग करते हुए ये सभी चीजें लगभग एबनॉर्मल हैं, तो इनको हटाने के बाद हम प्रॉफिट निकालेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट. सी इन दिस सॉल्यूशन, इन 15-16 प्रॉफिट वह 70,000, एडजस्टमेंट किया गया 10,000 का क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन था, इसको हमें हटाया तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 60,000. 16-17 में 1 लाख का प्रॉफिट था और 20,000 का यहाँ पर कोई एबनॉर्मल लॉस था, उसको हमने ऐड किया तो हमें 1,20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट बनता है. द सेम वे वी एडजस्टेड इन 17-18 and 18-19, एंड in that way we got the normal profit of 2,30,000 in 4 years.
and that was divided by 4, so we got 57,500 as average profit. And 2 years purchase of average profit was there, so 57,500 multiplied by 2, we got the value of goodwill 1,15,000. Next is the weighted average profit method. In this method we follow 4 steps. पहला step same है, normal profit of the business we have to calculate. Then in second step, weight to be assigned to each year's profit, यानी हर साल को हमें एक वेट देना है. और देन थर्ड स्टेप में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए हमारा फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, यानी एवरेज प्रॉफिट जो हमने वेट दिया है उसकी टोटल को जो वेट है उसकी टोटल से हम डिवाइड करेंगे. एंड फोर्थ स्टेप में वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से. इसको भी आप इस एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं. प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर लास्ट 5 years पर गिवन इन देयर हियर. In 16 it was 40,000, 17 48,000, 18 60,000, 19 50,000 and 20 30,000. Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of last 5 years weighted average profit of the firm. और वेट हमें क्या देना है 1 2 3 4 5 for the years ending on 31st March 16 17 18 19 20, यानी जो सबसे लास्ट का ईयर है उससे सबसे ज्यादा वेट देना है. 20 को हमें 5 का वेट देना है, 19 को 4 का, 18 को 3 का, 17 को 2 का एंड 16 को 1 का. सी हमने जब वेट दिया तो 16 का प्रॉफिट था 40,000, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया. 17 के प्रॉफिट 48 को 2 से किया, 18 के प्रॉफिट 60,000 को 3 से किया, 19 के प्रॉफिट को 4 से एंड 20 के प्रॉफिट को 5 से किया. तो हमारा इस तरीके से वेटेड प्रॉफिट आया 40,000, 96,000, 180, 2 lakh and 1,80,000. Total becomes 6,96,000 and total of weight becomes 15. 1 2 3 4 5 and its total is 15. So weighted average profit हमारा आया total of weighted average profit divided by total of weight, that is 6,96,000 divided by 15, that means 46,400. This 46,400 that is a weighted average profit is multiplied by number of years of purchase जो कि 3 है यहाँ पर, and in that way we got the value of goodwill 1,39,200. Second method was super profit method. Super profit क्या होता है? The excess of actual या average profit over normal profit is known as super profit. Now यहाँ पर हमारे सामने दो शब्द और आ गए, actual या average profit and normal profit. Let's see all these three: actual average profit, normal profit and super profit. Actual average profit is that profit or the average profit of past few years as described which a firm has earned. This is the actual profit. Second point is normal profit. Now here the normal profit means the profit which is earned by the similar type of business after investing similar amount of capital. इसको हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद कोई फर्म कितना पैसा अर्न कर सकती है उसका जो रेट होता है दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट रेट या स्टैंडर्ड प्रॉफिट रेट. सुपर प्रॉफिट मीन्स इसका फॉर्मूला है अगेन एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट में हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है या स्टैंडर्ड प्रॉफिट जिसको कहा जाता है, उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी होती है. कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू कैरी ऑन बिजनेस, and it may be calculated by two approaches. One is liability side approach, the other is asset side approach. In liability side approach, capital employed is equal to capital plus reserve minus goodwill if it is already there in the books. कभी कभी होता है बुक्स में दी होती है, बैलेंस शीट में दी होती है, तो उसको माइनस करेंगे. और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, यदि कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं तो उसको भी हम वहां पे माइनस कर देते हैं. ये लायबिलिटी साइड है.
एसेट साइड अप्रोच के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट्स, जिसमें से गुडविल, नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड फिक्सिशियस एसेट्स को छोड़ देते हैं और उन ऑल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस किया जाता है, तब जो आता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज द बैलेंस शीट। यू कैन सी capital of two partners, Aman and Bhaskar is given, general reserve is there, creditor is there, outstanding expenses are there, land and building, goodwill, investment, that is trade investment लिखा हुआ यहाँ पर, नॉन ट्रेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, stock, debtors, cash, deferred revenue expenses, that is advertisement. Now how we have calculated capital employed by both the approaches. Now see liability side approach के हिसाब से partners capital, there are two partners, जैसे आपको बताया था मैंने, कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, यानी 2 लाख उनकी कैपिटल है प्लस जनरल रिजर्व इज 90,000, दैट बिकम्स 290, एंड देन वी सब्ट्रैक्टेड फिक्सिशियस एसेट्स एंड दैट वाज हियर deferred revenue expense 10,000 and goodwill was there 30,000, that is also to be deducted, that means 40,000 is to be deducted. We got capital employed 2,50,000. इन द सेम क्वेश्चन अगर हम एसेट साइड अप्रोच से देखें तो ऑल एसेट्स थी हमारी 3,90,000, जिसमें से फिक्सिशियस एसेट्स यानी एडवर्टाइजमेंट था 10,000, गुडविल था 30,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 एंड क्रेडिटर्स 90,000, यानी सब मिलाकर 1,40,000। इसको माइनस किया तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,50,000, 2,50,000। नाउ I told you that I will tell you about investment. Investment is of two types. One is non-trade investment, the other is trade investment. Trade investments are those investments that are made in another enterprise for the furtherance of own business. यानी हमने किसी और बिजनेस में पैसा लगा रखा है लेकिन उससे हमारे अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगाया है, that is trade investment. And non-trade investment, those investments that are made to earn revenue by investing surplus fund, एक्स्ट्रा पैसा था लगा दिया कहीं पर ताकि हमें कुछ इनकम होती रहे, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, केवल थोड़ी सी इनकम हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल एम्प्लॉयड अनलेस नाउ क्वेश्चन मस्ट बी स्पेसिफाइड, बट unless investments are specified to be trade investment, they are taken as non-trade investment. यानी सवाल में अगर इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानकर सवाल को करेंगे। ना सी सुपर प्रॉफिट मेथड से मैंने अभी आपको केवल ये बताया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। अब यहां पर इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे हाउ वी विल कैलकुलेट द value of goodwill by super profit method. There are two partners A और B, they admit कर रहे हैं C को, यहाँ admission of C है, with effect from 1st April 2020, they agreed to value goodwill of at 3 years purchase by super profit method, for which they decided to take average profit of last 5 years. And last 5 years profit वर 16 का दिया हुआ 2 लाख, लेकिन इसमें including gain for 25,000 from sale of fixed assets, यानी ये एक एबनॉर्मल गेन है, इसको हम हटा देंगे। इन 2070 1,70,000 प्रॉफिट था जिसमें 50,000 का एबनॉर्मल लॉस की वजह से इतना आया था, अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट होता 2,20,000, यानी इसको हम ऐड कर देंगे। 18, 19 एंड 20 के नॉर्मली दिए हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म भी कैलकुलेट करके दी हुई है 15 लाख, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%, यानी अगर कोई दूसरा बिजनेस होता तो वहां पर 10% इस 15 लाख का प्रॉफिट होता, दैट इज स्टैंडर्ड या नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें यहां पर वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है। नाउ सी इन दिस सॉल्यूशन, जैसे मैंने आपको थोड़ी पिछली स्लाइड में बताया भी था, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमने प्रॉफिट उसमें से एडजस्टमेंट किया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, दैट वाज 10,85,000, उसको 5 नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया तो हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिला 2,17,000।
स्टेप 2 को फॉलो करेंगे और हम नॉर्मल प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करेंगे। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, दैट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमें प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था 1,50,000। हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 2,17,500, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। उसमें से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया 67,000। इन स्टेप 4 वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 67,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2,01,000 by this super profit method. Now it is the third method, capitalization method, to evaluate the value of goodwill. In this method we follow two ways, capitalization of average profit and capitalization of super profit. Capitalization of average profit means in this method goodwill is calculated by deducting capital employed in the business from the capitalized value of average profit on the basis of normal rate of return. In capitalization of super profit, goodwill is calculated by capitalizing super profit at the normal rate of return. थोड़ा सा ध्यान है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इसके अंदर। Capitalization method, capitalization of average profit. To calculate the value of goodwill by this method, we will follow 4 steps. Number 1, we'll calculate average profit as specified earlier also. Number 2, we'll calculate capitalized value of the firm. Means capitalized value of the firm means average profit into 100 upon normal rate of return, that is standard rate of return. And in this way we will get the value of capitalized value of average profit. In third step we will determine the value of net asset, or we call capital employed. And in fourth step we will find out the value of goodwill by using the formula, and that formula is capitalized value of business minus net assets. I am repeating, capitalized value of business that we calculated in step 2 minus net assets we calculated in step 3. That way we will get the value of goodwill. इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। A and B partners having rupees 2,50,000 as capital invested by each of them. They have rupees 30,000 and 20,000 respectively into their current account. Their average profit for last 3 years 1 lakh. Normal rate of return is 10%. Now you have to find out the value of goodwill of the firm. Firm does not have any other liability. ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी गई है क्योंकि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। Now capitalized value of the firm कैलकुलेट करने के लिए हमारा एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, that was 1 lakh एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, यानी हमें जो 1 लाख प्रॉफिट हुआ है इसकी कैपिटलाइज वैल्यू बनती है 10 लाख। हमारी जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 5,50,000, ए बी की कैपिटल और उनके करंट अकाउंट का बैलेंस मिलाकर। नाउ हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है 10 लाख और हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,50,000, then there is a difference of 4,50,000 and that is the value of goodwill by capitalization method, by capitalization of average profit method. यानी हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, उसकी वैल्यू आई 10 लाख, उसमें से एक्चुअल जो हमारी कैपिटल लगी हुई है एम्प्लॉयड है उसको माइनस किया तो हमें गुडविल की वैल्यू मिल गई, दैट इज हियर 4,50,000. To calculate the value of goodwill by capitalization of super profit, we will follow the 5 steps. Number 1, first of all we will calculate the capital employed. The formula is already told to you, net assets, maybe asset side approach or maybe liability side approach. Net asset is equal to all assets minus outside liabilities. Then in step 2 we will calculate the normal profit by the formula capital employed into normal rate of return divided by 100. And in third step we will calculate the average profit of the past years as specified in the question. In fourth step we will find out the super profit, average profit minus normal profit, that will be super profit. And in the last step we will calculate the goodwill using the formula super profit into 100 upon normal rate of return.
अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को. In this example, average profit of a firm is 1,50,000. Total tangible assets in the firm are 14 lakh and outside liabilities are 4 lakh. And in the same type of basis, the normal rate of return या standard rate of return is 10% of the capital employed. यानी यहाँ पर जितनी capital employed है उसका normal rate of return 10% मिलना चाहिए था, but हमें मिला है 1,50,000. Now see, capital employed है हमारी total tangible assets minus outside liabilities 14 लाख minus 4 लाख यानी 10 लाख हमारी कैपिटल लगी हुई इस बिजनेस में. और इस लगी हुई कैपिटल पर जो 10 लाख की कैपिटल है इस पर नॉर्मल रेट से हमें प्रॉफिट होना चाहिए था 1 लाख. सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो है 1,50,000 यानी एवरेज प्रॉफिट जो हमारा है. तो एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को हम करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है 50,000. एंड गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यहां पर सुपर प्रॉफिट है 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10. सो 50,000 इंटू 100 अपॉन 10 दैट इज 5 लाख. यानी कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाली एंड दैट वैल्यू बिकम्स वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. दैट्स ऑल फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन्स द जनरल एंट्रीज will be told to you in the next chapters. Thank you very much.